Protocols or intuition, which works better? Protocols. One symptom that always worries you, one symptom that patient comes with which always worries you. That is chest pain with normal ECG. पेशेंट को चेस्ट पेन है, हमने ECG किया है, वो नॉर्मल आ रहे हैं, पहला नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है, and after that means I have seen that means after 3-4 hours he has developed the heart attack. एंड अगर आप रिलेटिव को बोलते हो कि भैया एडमिट हो जाओ, हम 6 घंटा देखते हैं या एक दिन देखेंगे, वो रेडी नहीं होते हैं. नॉर्मली तो डॉक्टर साहब आप एडमिट क्यों कर रहे हैं? अर्लीस्ट ट्रीटमेंट लाइक मीन्स जैसे कि अगर स्ट्रोक पेशेंट आ गए फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्ट्रोक पेशेंट्स मीन्स आपका हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, अगर पहले ही घंटे में अगर आपके पास पहुंचा है, अगर 4.5 घंटे का विंडो पीरियड नहीं हुआ है, अगर आप उसका सीटी स्कैन करते हो और अगर वो पेशेंट को आप जो हम क्लॉट बस्टर्स कहते हैं वो अगर इंजेक्शन देते हैं, दैट पेशेंट कैन बी अ नॉर्मल, ही कैन लिव हिज नॉर्मल लाइफ, यू नो. The first hour in emergency care is a pivotal moment where every decision carries immense weight. It's a time of rapid assessments, critical choices, and life saving interventions guided by proven protocols like ABCDE and ATLS. In this episode, we explore what unfolds when a critical patient arrives, the challenges, the urgency, and the precision required. We will also uncover common warning signs patients often ignore and share some powerful stories from the front lines of critical care. Whether you are a medical professional or simply curious, this discussion sheds light on high stakes world of emergency medicine. Joining us today, we have Dr. Ram Desai. He is a distinguished consulting physician and intensivist, completed his MBBS from Shivaji University. He is renowned for his clinical expertise and compassionate patient care, holds a diplomate of National Board Certification (DNB). He is also a member of National Academy of Medical Sciences and Indian Society of Critical Medicine. His postgraduate training in internal medicine was undertaken at the University of Seychelles, Victoria, USA. IDCCM, IFCCM, and fellowship in clinical cardiology from Lilavati Hospital, Mumbai. Over 20 plus years of experience, he brings depth and precision to internal medicine. His dedication to evidence based practice sets him apart in critical care. Dr. Desai remains committed to continuous learning and professional excellence. He is highly respected among his peers and trusted by patients alike. Hello and welcome to Sayadri Health Talks. I'm Dr. Tushita, and today we have with us Dr. Ram Desai. Hello, sir. How are you? Thank you very much for Well- inviting me today, and I am very, very good. Welcome on And Sayadri nice to have a Health talk Talks. with you. Thank you. This is a really nice initiation by you, Thank you. Thank you and so we are much. really grateful for this. Oh, thank you. Thank you so much. You just made my day, I must say. So, Dr. Ram Desai, face of critical care, and I was just going through, the kind of wonderful work that you have done. So, I think you have worked pan India, be it starting from top, maybe Delhi. I then, began in Kolhapur as an Acha. MBBS student. After that, I worked in Mumbai at Harkishan Das Hospital. I did my there DNB medicine. Acha. After that, I have given my this MD medicine out there for Seychelles. After that, I moved to the Lilavati Hospital. For a long time, I was there. With Leela. I have cleared my diploma critical care medicine. That time, super specialty to do in critical care was only IDCCM, IFCCM, Yeah. and I have cleared my EDIC also. Acha. And after that, I have done my 2 years clinical cardiology course also. And then you have been through multiple cities, be it Delhi, Varanasi, Goa, Yeah. Mumbai. 2015, I left the Chennai. Mumbai. After that, I moved to the Goa. Mm-hmm. Then after that, moved to the Varanasi. And multiple times, I have got opportunity to do the locum at Delhi as well as Chennai also. Yeah. And I have means when my senior doctors were going out, that time they were keeping me as a locum. That's why means I have moved pan India. Now I am Yes. back to my native place. Karad. Native place, Karad, which needs you the most right now. Yeah. So what interests me was, as you said, right, that owing to this 20 plus years of experience that you bring on the table, the critical care in those days as a specialization was not something that everybody was able to take, or not much opportunities were there. But what went that you took up this specialization? In 2003, I finished my DNB medicine. Acha. That time,
My thesis topic was a ventilator associated pneumonia. अच्छा. That time, Praveen Kumar Jain, PK अच्छा. Jain, he is well known in India. हम्म. Actually, he made me to take that topic हम्म. that nobody should call me as I don't know the critical care. He told me that anybody would get up and in future they will call you are not intensivist. That's why you should choose it. And after that I developed interest, and I will like to tell that my boss means my respected sir, he Your has inspiration yeah, बोलते हैं he अगर. is the founder of the Indian Society of Critical Care Medicine, which अच्छा. was founded in around 97 98, अच्छा. and he was the president. And now this society is running very smoothly, and since 2003 it was a small stream now which has become a big ocean in India, you know. Yes, Now there yes. is a lot of work done by the Indian Society of Critical Care Medicine, and before 2010 there were not other university kind of degrees in that things, you know. Yeah, There yeah. means society started diploma, after that fellowship, then there is one EDIC, you know, European Diploma in Critical Care. It was before that 2010. After 2010, now universities have also incorporated like Mhm. DM, FNB, critical care. Mhm. Now the students are opting that also. That also. That time it was a really different, means different degrees. You know, nobody was thinking in that way. I have to become intensivist. हाँ हाँ Means हाँ. everybody in India is intensivist, means post MD, post anesthesia, but it is not like that. Now there are qualified intensivists are coming into the Picture. hospitals. Yeah. So as you have worked across Pan India, and critical care, or you know, the department, this department particularly, apart from the mainstream of treatment which is offered to the patient, also has a lot of work to be done when it comes to patient, patient family counseling or patient party counseling. So what I'm trying to ask you here is that while you have dealt with multiple type of people, be it from extreme north to South. Maharashtra. So, what is that one thing which you see common across every place where these patients or the patient's family kind of Basically, bring to you? first thing is the denial of disease. So, denial is across Denial is Indians. across, and reluctance of the relatives for Acha. means high-end treatments. You know. Acha. When as the treatment progresses in difficult diseases, it becomes really costly, and you requires a specific setups So, with denial and acceptance. acceptance. So, मुझे Yeah. नहीं हो सकता, डॉक्टर मुझे साहब, हो ही मुझे नहीं कभी हो ही सकता, नहीं सकता. मुझे हो ही नहीं सकता. आप कुछ तो बोल रहे हैं, फिर 10-12 डॉक्टर्स के पास जाके आगे बोलने आपने सही कहा. सही कहा था. And sometimes that disease has progressed a lot हाँ. when they come back, you know. Correct. So this is one thing which we are seeing across. Yeah. Okay. On that note, I wanted to ask you that what does the first hour of critical care looks like? I mean, in a critical care situation, what does the first hour looks? Usually we deal such patients in our emergency departments. Hmm. Emergency department is nothing but the extension of the critical care department. Hmm. तो क्या होता है जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है, Hmm. नॉट ऑल द पेशेंट्स आर सीरियस पेशेंट्स, Hmm. बट दे डू रिक्वायर मीन्स क्वारंटाइन, यू नो. एक कौन से टाइप का केस है, वो न्यूरोलॉजिकल है, कार्डियोलॉजिकल है, डू ही रिक्वायर्स रियली अर्लीस्ट ट्रीटमेंट, लाइक मीन्स जैसे कि अगर स्ट्रोक पेशेंट आ गया फॉर एग्जांपल, इफ द स्ट्रोक पेशेंट्स मीन्स आपका हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, अगर पहले ही घंटे में अगर आपके पास पहुंचा है, अगर 4.5 घंटे का विंडो पीरियड नहीं हुआ है, अगर आप उसका सीटी स्कैन करते हो और अगर वो पेशेंट को आप जो हम क्लॉट बस्टर्स कहते हैं वो अगर इंजेक्शन देते हैं, दैट पेशेंट कैन बी अ नॉर्मल, ही कैन लिव हिज नॉर्मल लाइफ, यू नो. अगर वही 4.5 घंटे होते हैं ना, तो उसके बाद में ही हैव टू लिव विद दैट पैरालिसिस फॉर द लाइफ टाइम. तो ये जब कन्विंस करते हैं, वो जो इंजेक्शन होता है 50-70,000 तक आता है एक्चुअली पूरा डोज, वो अगर दे देते हैं ना, तो उसका जो आगे का फ्यूचर है तो पूरा खर्चा बाकी का कम होता है उसका. लेकिन एक बार पैरालिसिस हो गया तो फिर वो भारत भ्रमण करते रहता है, ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, ये बेटर है, वो बेटर है. अगर हार्ट का इसका पेशेंट है, हार्ट अटैक का है, अगर उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अगर 1 आवर में इफ दे आर रेडी, अगर उसकी एंजियोप्लास्टी होती है, तो जो आपको मायोकार्डियल सैल्वेज होता है, जो मीन्स डैमेज होने वाला होता है, यू कैन सेव दैट थिंग, यू नो. दैट मीन्स फ्यूचर में जो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह जैसे होने वाले प्रॉब्लम, समस्या होने वाले होते हैं, तो वो शॉक में जाने वाला, लैंड अप होके उसकी इम्पेंडिंग डेथ होते हैं, दैट आल्सो यू कैन अवॉइड विद इन specific period time. And what exactly stops you from what is the hurdle exactly here कि हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं?
नहीं, usually the thing is that नहीं, हम the करते हैं, I mean, we do it for almost all our नहीं patients, हम but the hurdles which we are talking about, नहीं right? हर्डल मीन्स वो तो पहले लेट आते हैं पेशेंट्स हम्म, मीन्स अगर 4.5 घंटे का अगर समय आता है स्ट्रोक का कोई पेशेंट आता है हम्म, तो उसको ट्रीटमेंट सिंपल होता है एस्पिरिन दे दो और उसको लेटा दो हम्म, या हार्ट अटैक का पेशेंट आता है पहले अगर 6 आवर्स में आता है तो उसकी एंजियोप्लास्टी होती है हम्म, अगर वो 6 आवर्स के बाद में आता है तो एंजियोप्लास्टी करके मीन्स कितना उसको बेनिफिट मिलेगा वी कैनॉट से दैट द टाइम ओनली कैन टेल अबाउट दैट तो थिंग जब भी हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, देयर इज वन वर्ड व्हिच वेरी फ्रीक्वेंटली कम्स इन पिक्चर इज प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल Follow protocols. So what exactly protocols has to do and what role does it play in treating a patient during that first 1 hour when the patient arrives? नहीं usually whenever patient arrives in the emergency we have to see his breathing first then after that you see his airway means whether वो सांस सही से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं या कोई सांस में कुछ आवाजें आ रही है मीन्स कुछ ऑब्स्टेकल है उसके बाद सर्कुलेशन देखते हैं मीन्स व्हाट वी सी बीपी देखते हैं उसका पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं सैचुरेशन चेक करते हैं उसके बाद उसकी शुगर चेक करते हैं दीज आर द वाइटल थिंग्स दिस इज डन रूटीनली अच्छा. देन उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ABCD में इधर यू कैन से ड्रग्स एंड इज द एक्सपोजर मीन्स बाबा उसका टेम्परेचर वगैरह कितना है हाइपोथर्मिया है हाइपरथर्मिया है या उसको सीजर्स हैं अकॉर्डिंगली फॉर एवरी diseases the protocols differs अच्छा. and you follow according to that only. Okay. There is not a fixed protocol for each and everything but usually हर एक patient में हम breathing airway circulation So these are the ये basic things that you start. starts The first few things Right, that you yeah. take care of. and level of consciousness alertness these are also very important things. Okay. So what is the most common scenario which which you see and patients land up in emergency? What is Chest the pain. chest pain? And shortness of breath. Acha. So if we are saying that if there are 10 cases out of 10, how many are chest pain and shortness of breath? Almost in 70-80%. 70-80%. Apart from the chestness and shortness of breath, what are the other things that we are seeing in emergency? Stroke. And then after that overdose of diabetic drugs, Acha. hypoglycemia, altered Acha. sensorium. Acha. This is a simple thing. It looks like patient is in coma, but as soon as you give some dextrose or something, Patient is up. patient is up. So what are the few one of the biggest challenges that you have faced in treating patients during the first hour? Or I might as well reframe it that what are the biggest challenges that you face every day when you treat a patient during that first 1 hour? Convincing the relatives अच्छा हाँ कि because बाबा there is a आपको patient ये बीमारी है पेशेंट को हाँ एंड ही नीड्स सच काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट अच्छा अगर आप 1 घंटे में करते हो तो इसका असर जिंदगी भर उसको इतना पड़ेगा अच्छा मीन्स जैसे कि मैंने आपको कहा हाँ अगर जी। स्ट्रोक का पेशेंट है हाँ जी मुझे इन्फाक्ट है अगर उसको आप थ्रोम्बोलाइज करते हैं विद इन फर्स्ट 1 आवर देन इट विल बी एक्सलेंट थिंग अगर 4.5 घंटे के बाद पेशेंट मेरे पास आके भी मैं कुछ नहीं कर कुछ सकता नहीं हूँ कर पाओगे जस्ट जाओ बेड पे सो जाओ और सलाइन ले लो So, sir, while we talk about these symptoms and signs which patients, usually land up in emergency. So, if you have to give a few tips or few symptoms which every patient should look out for to avoid them landing into emergency at odd hours, what that would be? चेस्ट डिस्कम्फर्ट अच्छा, सबसे ज्यादा एंड होता है। ब्रेथलेसनेस अच्छा, कभी इग्नोर मत करो ओके, एंड दे कैन पुश यू इन अ ट्रबल वेरी बिग ट्रबल अच्छा। तो यूजुअली क्या होता है ना जब देखा है कि टिपिकली केस ऑफ हार्ट अटैक usually initially starts with a chest burn या राइट and patient takes whatever they can ले लिया पुदीना ले लिया सोडा पी लिया but it doesn't subside and they come to you at a much later stage. So what message do you have for such patients? नहीं कोई भी अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है तो डोंट इग्नोर इट गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर गेट डन द ECG एंड स्टिल इट परसिस्ट्स आफ्टर 1 hour also you repeat it अच्छा. and just check it out कि बाबा it is not a heart attack. So what's one thing that you wish every listener or a patient who lands up in emergency knew before reaching there? Now, what do you think as a patient when you come to the emergency? Oh my God. Or So all I can relatives? picturize, I can picturize an ambulance with a siren and stretcher and running and CPR and I can go on. So I think this is the common picture which we have about emergency. No, it is not like that. जब भी कोई पेशेंट लैंड होता है जरूरी नहीं कि वो बहुत सीरियस है एक्चुअली वी डू द ट्राइज
अच्छा हर एक पेशेंट सीरियस नहीं होता, 70-80% पेशेंट ऐसे होते हैं कि वहाँ से वो डायरेक्ट वार्ड में भी जाते हैं, अच्छा खाली 10-20% पेशेंट ऐसे होते हैं हु रियली रिक्वायर्स द इमरजेंसी केयर एंड ICU. आईसीयू इट डिपेंड्स अपॉन सिम्टम्स. अच्छा अगर कोई बच्चा आता है उसको सीजर आता है हम्म फॉर एग्जाम्पल, हम्म या कोई बड़ा आदमी रास्ते पे अचानक से गिरता है, हम्म इट कैन बी अ सिंपल सीजर to it can be a devastating heart attack. Let the doctor decide whether it is really serious or not. It's not okay. Share us some challenging case of your career which was really tough for you to handle, and how did you overcome that? एक्चुअली लास्ट ईयर एक हमारे यहाँ पे एक केस आई थी, अच्छा 145 years ओल्ड फीमेल, हम्म आई वोंट टेल नेम. तो उसको एक्चुअली स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ था एंड शी वाज ऑन ऑल्सो एंटीसाइकोटिक्स. ओके, अच्छा वो डॉक्टर साहब ने बढ़िया सर्जरी किया उसका स्पाइन का, उसका सब सही हो गया, बट आफ्टर दैट वो उठ ही नहीं रही है. उसके ब्रेन का एमआरआई किया, स्पाइन का एमआरआई फिर से किया, कुछ नहीं मिल रहा है. उठ ही नहीं रही है मतलब शी इज नॉट कमिंग आउट ऑफ या मीन शी बिकेम ड्राउजी डे बाय डे बाय डे बाय. अच्छा शी वाज okay. ऑपरेटेड आउटसाइड. अच्छा तो एकेडी तो चल रही थी, मीन्स टीबी के ड्रग चल रहे थे. उसके बाद डॉक्टर साहब ने आईसीयू में लेके आए, उन्होंने मुझे एक रेफरेंस किया एज ए इंटेंसिविस्ट. जब मैंने उसकी ओवरऑल सब पूरी हिस्ट्री खंगाल डाली तो मुझे ऐसा दिखा कि सी वाज ऑन एंटीसाइकोटिक्स अच्छा एंड आफ्टर दैट सी वाज वेरी स्टीप, अच्छा देन आई सॉ दैट कि मीन्स उसने कुछ एंटीसाइकोटिक्स मिस हो गए थे. तो एक्चुअली एक मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम करके एक स्टेट होती है बॉडी में, जब भी आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है एंटीसाइकोटिक को तो पेशेंट स्टिफ होते जाता है. स्टिफ होता जाता है एंड वी हैव मीन्स डायग्नोस्ड हर द सेम, उसके सीपी के लेवल्स वगैरह बड़े थे एंड उसको रिकवर होने को 6 महीना लगा. उसको हमने यहाँ से ट्यूब किया, वेंटिलेट किया, नाउ सी इज वॉकिंग. शी हैज बिग बेड सोर्स, मीन्स ऑलमोस्ट 1 साल तो गया ना. उसका एक ही मीन जो टीबी के ड्रग्स है वो बंद हो गए एंड उसको एक छोटा सा एंटीसाइकोटिक ड्रग मैंने स्टार्ट करके रखा. so now she is एंड आई कंसल्टेड टू माई सीनियर न्यूरो फिजिशियंस ऑल्सो इन मुंबई. They were also of the same opinion. It was a malignant neuroleptic syndrome and it is very difficult to treat. And अगर पेशेंट अगर उसमें लैंड अप होता है तो बहुत टाइम पे मीन्स 3 months to 1 year तक उसका वो ट्रीटमेंट ही चलता रहता है. अगर लेकिन उसमें से बाहर आता है नहीं आता है वो टाइम ही बता देता है. बट दैट लेडी सर्वाइव्ड. इट वाज अ रियली टफ केस फॉर मी. wow sounds like a dream Yeah. for a patient who was in this state to recover so smooth. Okay, so on that note, moving on to the next segment, which I have a few questions for you, and if you can answer these quick fast, I might also read out a few sentences which can be a myth or a fact. So let's bust some myths Okay. today. So the first one is, the first thing you check in a critical care patient once he lands up in emergency. We always go from the breathing, airway circulation as well as sugar. Okay. One red flag symptoms patients should not ignore. I think I know the answer. Any right? chest discomfort as we discussed earlier. Yeah, chest discomfort. One thing every patient should know about emergency care. I want to tell them, अगर आपका जो डॉक्टर है उस पर छोड़ दो आप और उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, लेट हिम हैंडल दैट थिंग. Oxygen is always the first line of treatment in an emergency. Myth or Not all the fact? time. Not all the time. Some patients require, some patients don't require. Protocols or intuition, which works better? Protocols. Communicating with family or treating the patient? What is important What or is difficult? difficult to communicate with the relatives. Okay, so what are the And to common challenges explain that you them. find? And first of all, to make them understand the situation and the gravity of the disease. Okay. It is very difficult. So एक तो हो जाता है कि denial में रहते हैं. Denial में रहते हैं हमेशा. Apart from denial, what are the other challenges that you see? Maybe sometimes financial challenges. Financial challenges as well. Okay. Biggest myth about emergency care? What do you think about that? I think it's more kind of that it's a one-way journey. It is not like that. Yeah, that is the biggest myth. This is always the best approach. Emergency means you get the earliest care in hospital setup. अगर आप वही ओपीडी में बैठोगे तो 3-4 घंटा जाएगा. अगर आप इमरजेंसी में आते हो तो you will be attended within first 5 minutes. Not 5 minutes. As soon as you land up there, somebody to take we care check everything and we can see that what is wrong with you. That is the best way. Okay. One symptom that always worries you. One symptom that patient comes with which always worries you. That is chest pain with normal ECG.
Oh my God. So, what are the typical things which scares you in this situation? नहीं, मेनी ऑफ द टाइम्स मेरे रेसिडेंसी से लेके मैंने अभी तक जब तक कंसल्टेंट बना हाँ. तब उसके बीच में कभी ऐसा हो गया है कि पेशेंट को चेस्ट पेन है, हमने ईसीजी किया है, वो नॉर्मल आ रहे हैं, पहला नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है, एंड आफ्टर दैट मीन्स आई हैव सीन दैट मीन्स आफ्टर 3-4 आवर्स ही हैज डेवलप्ड द हार्ट अटैक। Heart attack. Okay. Okay. एंड अगर आप रिलेटिव को बोलते हो कि भैया एडमिट हो जाओ, हम 6 घंटा देखते हैं या एक दिन देखेंगे, वो रेडी नहीं होते। नॉर्मल है तो डॉक्टर साहब आप एडमिट क्यों कर रहे हो, और उस वक्त हम जो ब्लड टेस्ट भेजते हैं ना वो भी नॉर्मल आते सब हैं। नॉर्मल आते हैं. या Most underrated skill in critical care. So I think professional skill. We are नहीं, talking ऑल about प्रोफेशनल this. स्किल्स आर Important. इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड ऐसा कोई स्किल्स नहीं है कि जो काम नहीं आता है, अच्छा. सभी स्किल्स काम में आते हैं। Okay. So professional, non-professional skills or anything. बहुत 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 है। What's harder, diagnosing a patient or deciding a treatment plan? Both of them are simple, you know. If relatives are willing to do the things, if the patient is got convinced, patient convince होना चाहिए बस इसमें, और relatives भी convince होने चाहिए, तो उसमें से जो मीन्स डिफिकल्ट डिसीजेस भी आसान होते हैं। लेकिन अगर डिसीज सिंपल है और रिलेटिव्स एंड पेशेंट इन डिनाइल मोड, देन इट बिकम्स वर्स्ट। One thing medical schools didn't prepare you for. नहीं, सोशलाइजेशन। अच्छा. Yeah, And, socialization. so why do you say so? नहीं, बिकॉज कैसे होता है, जैसे जब से हम मेडिकल स्कूल में जाते हैं तो वी आर द अंडर कवर ऑफ आवर सीनियर्स ऑल द टाइम। जैसे कि मैं अभी बॉम्बे में था, तब वहाँ पे हमारे प्रकाश सर थे, डॉक्टर अंसारी सर थे, उनकी छत्र छाया में मैं 2015 तक रहा। तो कभी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे ये रिलेटिव से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये डिसीज से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी, यू नो, व्हेन आई कॉल, दिस इज मीन्स जस्ट सर ये हुआ है भैया, तो ये कर दे करके। लेकिन व्हेन आई लेफ्ट द लीलावती हॉस्पिटल, देन आफ्टर दैट आई रियलाइज हाउ डिफिकल्ट जॉब इट इज, कि टू टॉक विद द रिलेटिव्स, also to talk with the patients and convince them and tell them the gravity of the disease. So it's not the treatment part which scares you. It is the Yeah. communication which medical schools didn't teach, Right, teach yeah. you through. One phrase you often say during emergencies. Hit hard, hit fast, and don't jump to the conclusion very fast. Hit hard, hit fast, don't jump to the Yeah. conclusion. Just again, अगर आपको कोई things are unsolved, na, just open up the patient again, means right from his first investigation, right from his first symptoms, go through it, then take the opinions of other colleagues also, you know. Peer opinions. हाँ, बाकी के उनके ओपिनियन ले लो और उसके बाद में डिसाइड करो। You bring such huge experience on table. So what message do you have for all budding doctors who are planning to come on this stream? Just follow your seniors here. Acha. That I did, you know, in my life, Okay. and I am doing good. So the mantra is follow your seniors. Follow your seniors, means your teachers, seniors, जो आपको हमेशा सिखाते रहते हैं। Uh-huh. And how do they maintain their own, mental stress levels while treating? Because this is such a tensed department, right? Right. Yeah. So how do they maintain that? In fact, before that, I would want to ask you. Whenever I How do speak I to you, maintain? yes, whenever I speak to you, you are always so calm and so composed, never, in a hurry or hassle. How do you maintain this in spite of working in such a tense situation? That is, it is very really difficult answer, you know. Meditation करते हो? Sometimes करते हो आप? करते, So how do you, पूजा करता हूँ मैं Okay. 5-10 minutes daily. So just connecting to the, Just connecting to the some different world, you know. so that keeps you going. Yeah. Okay. So on that note, before we wind up for the day, what would be one message that you want to give out to all listeners out there about critical care and emergency care? जब भी कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका घर का पर्सन कभी भी बीमार होता है तो डोंट गेट पैनिक, जस्ट सिट डाउन विथ योर कंसल्टेंट, डिस्कस विद देम, सी द ग्रेविटी ऑफ द डिसीज एंड गो अकॉर्डिंगली। एंड जो भी है, डोंट कीप योर माइंड ऑल द टाइम अंडर डिनाइल मोड। एंड उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है तो टेक अनदर ओपिनियन ऑलवेज, कि यू कैन आस्क योर कंसल्टेंट टू टेक other opinion, that it will cool down your mind also and it will make you placid. Okay. So on that note, we thank you once again for giving us some time for the Sayadri Health Talks.
It was wonderful having you on today's podcast, and we had a beautiful discussion and so many things we spoke about. And thanking you once again. On that note, signing off, Dr. Tushita, Sayadri Health Talks.